that we are talking about, this is a controversy ahead of the Republic Day celebrations in the national capital. The BJP and the Aam Aadmi Party are locked in a bitter political war of words on the issue of security this time. BJP candidate Parvesh Verma has now drawn attention to the influx of vehicles from Punjab ahead of Delhi elections, saying that thousands of vehicles bearing Punjab number are roaming specifically in New Delhi constituency from where Arvind Kejriwal is contesting. He has also claimed that the Punjab government officials are installing Chinese CCTVs in different parts of the constituency to cover up Kejriwal's failures and mislead the people. He is accused now the Aam Aadmi Party of poll code violation and has written to both the Election Commission as well as the Delhi police seeking action. Congress candidate, meanwhile, from the New Delhi constituency, Sandeep Dixit, had echoed similar concerns, claiming that he has photographs of Punjab police personnel campaigning for the Aam Aadmi Party in Delhi. He says that he shared it with the police for investigation and has also appealed to the Election Commission to take note of this. नहीं, पंजाब के लोग घूम रहे हैं। मेरे पास खुद फोटोग्राफ्स हैं। पंजाब पुलिस के लोग कुछ कैंप्स में कैंपेनिंग कर रहे थे। मैंने भी यहां अपने एसएचओ साहब को भी मैंने भेजा है कि इसकी तहकीकात की जाए। और ये बात तो सही है कि इनके बाहर से बहुत से ज्यादा लोग आकर कर रहे हैं। अब सीसीटीवी कैमरा क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, अगर ऐसा है तो ये तो आचार संहिता का उल्लंघन है। इसमें सीधे सीधे एक्शन लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। सारे मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, कॉर्पोरेटर, सब कार्यकर्ता आज के दिन में वो यहाँ पे नई दिल्ली विधानसभा में आकर उन्होंने डेरा डाल दिया है। हजारों की संख्या में यहाँ पे पंजाब के नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं। उनमें कौन लोग हैं? यहाँ पे 26 जनवरी को मनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे वो क्या ऐसा बड़ा काम करने वाले जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है? और उसके ऊपर में आज हमें पता लगा कि चाइनीज कंपनी के कैमरे, सीसीटीवी कैमरा, जो सरकारी कर्मचारी हैं पंजाब के, उनको बुलाकर, जो वहां के टीचर हैं उनको बुलाकर उनके हाथों से ये कैमरों को लगवाया जा रहा है। However, Punjab Chief Minister Bhagwant Mann was quick to hit back at the BJP candidate Parvesh Verma, calling his remarks as dangerous and insulting towards him and all Punjabis. He's accused the BJP of trying to project all Punjabis as a security threat to the nation and asserted since Delhi is a national capital, vehicles from all states regularly ply there. Let's put that out exactly what the Punjab Chief Minister has to say. दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ हर राज्य के लोग आते हैं, यहाँ हर प्रदेश के नंबर की गाड़ियां चलती है। किसी भी राज्य के नंबर की गाड़ियां देश को किसी भी हिस्से में जा सकती है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। बीजेपी का ये बयान सुनिए, ये बेहद खतरनाक, चिंताजनक और पंजाबियों के लिए अपमानजनक है। ये पंजाब के नंबर की गाड़ियों को चिन्हित करके ये कह रहे हैं कि ये दिल्ली में पंजाब की गाड़ियां क्यों घूम रही है। वो ऐसे कह रहे हैं जैसे पंजाबी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये मेरा और देश के हर पंजाबी के लिए बेहद अपमानजनक है। आज हर पंजाबी बेहद पीड़ा और अपमान महसूस कर रहा है अपनी गंदी राजनीति के लिए। इस तरह कि पंजाबियों को देशभक्त पर सवाल उठाना उनके लिए ठीक नहीं है। अमित शाह जी, आपने ना देश के बॉर्डर को सुरक्षित रख पा रहे हो और ना ही दिल्ली को। इतने हजारों बांग्लादेशी और रोहिंग्या देश में आ रहे हैं, आपको उनसे दिक्कत नहीं है, लेकिन पंजाबी और पंजाब से दिल्ली आने वाले पंजाबियों को आपको देश से खतरा आप बोल रहे हैं। आपको पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए। दिस इज व्हाट भगवंत मान सीम्स टू बी नाउ हिटिंग बैक। इन द मीन टाइम, लेट्स गेट इन अ वर्ड एज फार एज फ्रॉम Pradeep once again on this, because Pradeep, cars coming from the state of Punjab, exactly what is the role when we are looking at the allegations being leveled by the BJP leader and the Congress party leader, saying that there is a visible presence of police personnel, of people who are called in from Punjab so that they can partake as far as when it comes to Arvind Kejriwal and to save that seat for him in the coming Delhi elections. These allegations are serious. Yes, a very serious allegations from both Congress as well as the BJP side. So we have seen that ahead of Republic Day celebration, all these political parties are locked in bitter war of words and they are expressing the security concern. So issue is not about that Punjabi vehicles are with the vehicles moving in Delhi or the vehicles with the Punjab numbers moving in Delhi. What actually their concern is that in some of the cases they are saying the police personnel are involved in campaigning and that which they can't do. And the second concern that has been raised by them is that many of the employees have come from Punjab side and they are being used to install CCTV cameras, and that's again a security threat and violation of model code of conduct. So in this regard, they have already brought this issue to the notice of Election Commission of India. So Parvesh Verma was the first one to say that many of those vehicles are roaming around at a time when the Republic Day is around the corner. So there is a need for the check and balance, that they have to find out what these vehicles are doing. There is every possibility that anti-national elements can also be moving around at a time when the Republic Day is to be celebrated.
written, so there is a need for the check. And the second thing is even Sandeep Dixit has gone one step further. He has said that he has got to know that many of them, these police personnel, right now they're campaigning for Aam Aadmi Party candidate Arvind Kejriwal, and he said that he has already taken the photograph and brought this matter to the notice Well, of Election remains to Commission. be seen if all of that is submitted to the Election Commission and the Delhi police, if any action is initiated on part of the ECI itself. However, these are serious concerns that are being raised by the BJP and also by the Congress party. Pradeep Datta, thank you very much for joining in. With that, we head into a short break.